guys, posting a video after a lot of days because I just got involved into a lot of job type of things where आपको पता होगा कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, so I am constantly applying for jobs and I got some callbacks for some assessments and all, so that's why I am posting this video like 5-6 days after. This week was pretty hectic for me, so main thing is I'm not here to talk about myself, but through this phase of life where I have no classes, zero classes, just a research purpose things and constantly applying for jobs has taught me something like competitiveness in your life is way more important than you think. And intentional competitiveness is something you need to have, in my opinion, and absolutely it crushes your self-confidence and it awakens your ultimate self-awareness. Why I am saying so? I used to think that I am pretty good in the domain of data science and machine learning, which might be true, but might not be true as I used to think of it. Ki I am pretty good, college में मैं अच्छा हूँ. But when I see profiles of other people who actually are doing jobs in those sectors, in big tech companies, like not even big tech, even in mid companies or mid-mature startups, when I go through their profile, I was like blown up in LinkedIn that they have so many achievements. Now I know they can fake achievements, but the fact is, even if you fake, even to fake all those things, you need to know all those things. You need to know at least the name of the skills. So बात वही हो गई कि एटलीस्ट एग्जाम में चीटिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए एग्जाम का सिलेबस क्या है और सिलेबस के अंदर है क्या. अगर आप बिल्कुल ही पढ़ के नहीं जाओगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा. चीटिंग करने के लिए भी स्किल्स चाहिए होता है कि इंटेलिजेंटली चीटिंग कर लो भाई. सो वही दैट कॉम्पिटिटिवनेस, इफ यू वांट टू एक्चुअली know yourself ki how much you are qualified for a specific role or specific thing that you are doing, you have to take competitiveness in your hand. You have to compete with others. You have to see that हो रहा है कि नहीं, मतलब आप दूसरे के तुलना में कितना स्टैंड आउट कर रहे हो मार्केट में. बिकॉज कंपनीज आर नॉट मेड फ्रॉम योर कंपनीज आर नॉट मेड बाय योर फादर एंड मदर्स इमोशन कि अच्छा मेरा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है सो लेट्स गिव हिम अ जॉब, लेट्स मेक हिज लाइफ इजी. नो, यू आर कम्पीटिंग विद योर सेल्फ. एंड हर किसी का अपना अपना स्टोरी है, हर किसी का अपने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स है एंड दे आर कॉम्पिटिंग लाइक यू आर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट देयर प्रॉब्लम्स. जिसका जितना एफर्ट ज़्यादा होगा वो उतना आगे बाजी मारेगा. दैट्स द मोस्ट सिंपल थिंग. सो इफ यू वांट टू ग्रो, compete. That's all.